Hello, good evening students. A very good evening. Confirm me the audibility and visibility, please. Yes, very good evening to all of you. All clear? Audibility, visibility, is it clear, please? All clear, very good. Chaliye, very good evening to once again to all of you. Welcome back to new subject, algorithms. Okay, from the GATE examination perspective. So on behalf of the PW platform, once again I welcome you all back to the new course. One of the very important course from the examination perspective, from the GATE exam perspective, from interviews perspective, or from placement perspectives. Okay, in all respects, one of the important course, one of the core course of computer science is algorithms. So, but problem is we are going to cover up this in a crash course, fast, or maybe you can say rapid revision course. But anyway, we'll try our level best to justify to the maximum possible extent. Okay? So, सबसे पहले let's see what they have prepared. This is just a brief for those who are attending my lecture for the first time, a brief profile of mine. My name is Dr. 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞. I did PhD in computer science, M.Tech, B.Tech in computer science, and I have research experience. And coming to GATE as well, I have more than 20 years of experience in teaching, mentoring students for GATE exam. Okay, right from 1999 to 2000, I have been involved in teaching, and I have been teaching several courses, and primarily the flagship courses of operating systems and algorithms I have been teaching for quite a long time. Okay, so that is just a brief about myself. आज के सेशन में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा, इन डिटेल डिस्कस करेंगे हम algorithm सब्जेक्ट का. Yeah, welcome again all of you, please. Those who are wishing me again from my side also a very good evening to all of you and welcome to the PW platform. ठीक है, तो सिलेबस डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स पे आपको एम्फसाइज करना है, कौन से टॉपिक्स पे एट दिस मोमेंट जब आपके पास सिर्फ 2 महीने बाकी हो तो आप कैसे प्रिपेयर करें, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे. फिर उसके बाद ब्रीफली हम स्टार्ट करेंगे आज सब्जेक्ट एल्गोरिथम कॉन्सेप्ट और लाइफ साइकिल स्टेप्स में. राइट, व्हाट आर द लाइफ साइकिल स्टेप्स एंड व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम, नीड फॉर एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एक्सेट्रा. राइट, ओके, वेरी गुड. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सिलेबस के बारे में पहले डिस्कस कर लेंगे. मैं यहाँ पर गेट का जो सिलेबस है उसको थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाकर आपको सब टॉपिक्स बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन हैव ए गुड कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया कि आपको कौन से टॉपिक्स कौन से डोमेन में पढ़नी है. ठीक है, हाँ, इसमें शक नहीं कि हम क्रैश कोर्स में शायद पूरे ना करें, लेकिन आपको आइडिया तो होना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक्स किस पाथ में पढ़ना है, लर्निंग पाथ क्या होना चाहिए. राइट, कौन से टॉपिक्स पे आपको एम्फसाइज करना चाहिए, वो मेरा पहला डिस्कशन है जो हम बात करेंगे यहाँ पर. देखिए, आप जनरली मैं ये कहता हूँ कि दिस कोर्स इज एक्चुअली कॉल्ड डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स. हम इसे लिखते हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स. यस, डेफिनेटली दिस विल बी वेरी गुड फॉर योर रिविजन. That's what I said. अगर आपने कोर्स एल्गोरिथम्स का ऑलरेडी किया हो तो this particular these sessions of crash course will definitely be 100% beneficial for your revision. इसके बाद आपको फिर रिवीजन करने की शायद ज़रूरी ना हो. ठीक है, तो हम ये कहते हैं डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देयर आर 2 एस्पेक्ट्स. वन इज डिज़ाइन, द अदर इज एनालिसिस पार्ट. डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज. यस, डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज, कौन से स्ट्रैटेजीज है एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के लिए. तो एक पार्ट है डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज, जो मेन कोर पार्ट है ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. राइट, एंड नेक्स्ट इज एनालिसिस पार्ट. एनालिसिस में देयर आर 2 क्वेश्चंस जो आपको एड्रेस करनी है, जो आपको देखना है. वन इज व्हाई शुड बी एनालाइज. फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनालिसिस. राइट, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस. देन व्हाई शुड बी एनालाइज. ये जो क्वेश्चंस है हमें आंसर करने हैं.
देन ऑब्वियसली जब आप समझ चुके कि क्या आपको एनालिसिस का मतलब क्या है और क्यों आप एनालिसिस करना चाहोगे, उसके बाद नेचुरली क्वेश्चन आएगा कि हाउ टू एनालाइज। ये 3 क्वेश्चंस यू हैव टू एड्रेस। हाउ, जिसे मैं अपनी ओन टर्मिनोलॉजी में बोलता हूं मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस। मेथोडोलॉजी, अप्रोच ऑफ एनालिसिस, कैसे एनालिसिस करते हैं। जनरली इट इज माई ऑब्जर्वेशन, ये मेरा अपना ओन पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि मैं देखता हूं अक्सर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को, व्हेन आई आस्क हाउ डू यू एनालाइज द एल्गोरिथम, they immediately say, sir, asymptotic notations. That is absolutely vague answer. Asymptotic notation is not a method for analysis. It is a misconception. ठीक है, हम देखेंगे कोर्स में, क्रैश कोर्स में भी मैं आपको थोड़ा एम्फसाइज करूंगा टॉपिक पे कि क्यों आपको एनालिसिस करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, नीड फॉर एनालिसिस एंड हाउ टू डू एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक्स में भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इफ यू ऑब्जर्व। So first you should get yourself well familiarized with algorithm concept and life cycle step, मतलब step by step क्या प्रोसीजर होता है फॉलो करने के लिए। फिर उसके बाद अभी मैंने कहा फर्स्ट पार्ट इज एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। तो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स में देखिए आप, वी हैव टू सी अंडरस्टैंड वेरी वेल नीड फॉर एनालिसिस। भाई हमें क्यों करनी चाहिए एनालिसिस, यू शुड नो दिस रीजन फंडामेंटली वेरी वेल। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस एनालिसिस, वेयर वी विल सी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है। या थैंक यू वेरी मच केरू ताकारी फ्रॉम नेपाल, वेरी गुड। आई विल कम टू दी prerequisites, I will come to the textbook, I will also tell you all other resources that you can watch for this subject, don't worry. Then as I said, after understanding what is the need for analysis, why the need for analysis, then you have to understand how, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था, how, methodology. As you know very well, perhaps शायद आपको पता हो, जो आपने पढ़ा होगा, कि there are 2 important methods for analysis. One is called a posteriori analysis, the other is called a priori analysis. Experimentation analysis and a priori analysis. Platform dependent analysis, platform independent analysis. ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके लिए भी, डोंट प्रॉब्लम। So that's what I have written, a posteriori analysis, a priori analysis. फिर उसके बाद types of analysis, जहाँ पे आपने शायद पढ़ा होगा कि where we basically talk about like worst case analysis, best case analysis, average case analysis. Behavior of algorithm भी बोलते हैं हम इसे, types of analysis, behavior of analysis. ये सब जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, you make sure that you are well comfortable with this, even if you don't cover some of them in the crash course, because it's a crash course. तो पूरे शायद हम नहीं ना कवर पाएं, लेकिन ये आप मेरे जितने भी ये स्लाइड्स है पूरे आप केयरफुली रखिए और टॉपिक बाय टॉपिक मेक श्योर कीजिए कि आप पूरा थोरोली पढ़ेंगे गेट एग्जाम के लिए हर चीज़। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ना भी करें क्रैश कोर्स में, लेकिन आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दे रहा हूँ मैं सिलेबस का, so that you can prepare well for this course of algorithms. फिर उसके बाद आफ्टर टाइप्स ऑफ एनालिसिस वी विल टेक ए टूल दैट हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, पर्टिकुलरली इन ए प्रियोरी एनालिसिस, जिसे हम बोलते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन। मेरे अपने फॉर्मेट में मैं इसे शॉर्ट में लिखता हूं, जनरली ASN, मेरा अपना ओन कन्वेंशन है, असिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो हम देखेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशंस इन द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, उसका रोल क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, right? So it acts like a mathematical tool. Actually, asymptotic notation is a mathematical topic. हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं एनालिसिस में, ये हमें अंडरस्टैंड करना है, ये लिंकेज एस्टैब्लिश करना है हमें। What is the role of asymptotic notations? Actually, asymptotic notation purely mathematical topic है. It is applied for functions to get the bounds of functions, to apply the bounds on the functions. वो हम क्यों यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एल्गोरिथम एनालिसिस में, ये लिंकेज आपको एस्टैब्लिश करना है, जरूरी है अंडरस्टैंड करना। So we will talk about different asymptotic notations. फिर उसके बाद properties of asymptotic notations. ठीक है, यहाँ पर numerical problems होंगे आपको, right? If you see from the previous questions of GATE, a number of numerical questions were asked on asymptotic notations. So fundamentally from this chapter of analysis of algorithms, आपको ये चाहिए कि you are well comfortable with asymptotic notations. आपको extreme clarity होना चाहिए definitions of big O, omega, theta, small omega और उनके properties. कुछ questions हम यहाँ पर solve करेंगे आपके practice के लिए. We will understand all the 5 asymptotic notation. मैं पूरे definitions आपको बताऊंगा. Some properties also we will discuss and some typical questions also we will work out. चलिए फिर आगे बढ़ेंगे. Then framework for recursive algorithms. कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको डिटरमिन करने के लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर एनालाइजिंग रिकर्सिव एल्गोरिथम्स।
उसके लिए कई टाइप्स ऑफ रिकर्सिव एल्गोरिथम मैं लेता हूं जनरली टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड गिव ए फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग बाय मीन्स ऑफ ए मेथड कॉल्ड बैक सब्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद ये आप शॉर्टकट मेथड जैसा मास्टर थियरम है, मास्टर मेथड है, वो भी आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज देन ए प्रियोरी एनालिसिस ऑफ नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम्स। यहां पर नॉन रिकर्सिव एल्गोरिथम्स का मेरा मतलब यह है कि समटाइम व्हाट हैपेंस इज यू विल बी गिवन ए जनरल प्रॉब्लम that may need to be solved by using some general techniques। शायद कोई सर्चिंग टेक्निक से आप सॉल्व कर लोगे या सिंपल डेटा स्ट्रक्चर्स लेकर सॉल्व करेंगे, जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस गेट क्वेश्चन में, मैं क्रैश कोर्स में भी आपके लिए डिस्कस करूंगा। ठीक है, ए कपल ऑफ क्वेश्चंस, डोंट वरी। जनरल प्रॉब्लम्स का मेरा मतलब क्या है, आप उसको कैसा उसका एल्गोरिथम डेवलप करोगे और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिटरमिन करेंगे, हम देखेंगे कपल ऑफ प्रॉब्लम्स। तो यहां पर जनरल प्रॉब्लम्स के लिए दिस ऑल्सो दिस। देन और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है एनालाइजिंग लूप्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनी क्वेश्चंस इन अर्लियर पेपर्स बेस्ड ऑन लूप कॉम्प्लेक्सिटीज, मतलब या तो फॉर लूप होगा या डू लूप है। ठीक है, फॉर लूप होगा या डू लूप है या वाइल लूप है, रिपीट अंटिल है। द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड यूजिंग एनी लूप। तो लूप के टिपिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको एक सिंपल फेमिलियरिटी होना चाहिए कि अनफोल्डिंग मेथड से कैसे लूप की कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमिन की जाती है, नंबर ऑफ आइट्रेशन से कितने लूप की कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमिन की जाती है। ठीक है, दैट वी विल टेक अप सम केस स्टडीज टू अंडरस्टैंड लूप कॉम्प्लेक्सिटीज। फिर उसके बाद आएगी लास्ट टॉपिक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब तक हमारा डिस्कशन वाज फोकसिंग ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सेकेंड एस्पेक्ट है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हाउ टू डिटरमिन द स्पेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ एल्गोरिथम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो मैं आपको डेफिनेशन भी बताऊंगा, प्रोसीजर भी बताऊंगा और कुछ सैंपल एग्जांपल्स भी लेकर आपको बताऊंगा कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिटरमिन की जाती है। राइट, उसमें अंदर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कंपोनेंट्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं विद एग्जांपल्स। हाँ, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो मैं चाहूंगा शायद मैं क्रैश कोर्स में पूरा ना कर पाऊं, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू तो दूंगा मैं आपको। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो एक वन ऑफ द प्री रिक्विजिट है, वन ऑफ द प्री रिक्विजिट, right, is mathematical background is one of the prerequisite for this course। तो कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऑफ मैथमेटिक्स जिसे आपको पहले अपने आप को फेमिलराइज करना है बिफोर स्टार्टिंग एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आई वुड से द कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, नॉन पॉलिनोमियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, यू नीड टू गेट योरसेल्फ वेल फेमिलराइज्ड। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनी ए टाइम्स इट हैपन दैट स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम्स एंड देन दे गो रॉन्ग इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशंस। ठीक है, तो लॉगरिथम्स। फिर उसके बाद है समेशन सीरीज, समेशंस, arithmetic progression, geometric progression, right, harmonic progression, how to find sum of series। आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा, so from there you can be algebra और कैलकुलस में, so from there you can basically get yourself familiarized। अगर आप, मैं ये चाहूंगा कि इन डिटेल आप इसके मैथमेटिकल जो बैकग्राउंड है, टॉपिक जो मैं लिख रहा हूं, उसके एक शॉर्ट नोट्स बनवा लीजिए, आप बना लीजिए या बनवा लीजिए, then you can always have like a reference, summations। फिर उसके बाद देन सम बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, देन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपने शायद पढ़ा होगा लाइक फॉर एग्जांपल रिकरेंसेस। So these are some of the mathematical topics which is generally expected from a student before starting algorithm that they should be well familiarized with। Particularly मैं बता रहा हूँ emphasizingly करते हुए कि logarithms are important, summations are important, exponents are important, recurrences are very important। Probability theory general understanding होनी चाहिए, binomial coefficients की भी एक general understanding होनी चाहिए। हाँ, और एक भी है mathematical induction, अगर आपको familiarity हो, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। Induction, somewhere in theoretical proofs that will be useful for your analysis।
तो ये टॉपिक्स पे अगर आप फेमिलराइज कर लेंगे अपने आप को मैथमेटिकल टॉपिक्स पे, तो आपकी एनालिसिस काफ़ी एफिशिएंट हो जाएगी. यू कैन डू द एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट. ठीक है. फिर उसके बाद जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन ऑल दिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वी कैन टेक एंड कंप्लीट. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोर्स, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, जहां पर हम एम्फसाइज कर रहे हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज पर, मोर ऑन टाइम एंड in the form of recursive algorithm, non-recursive algorithm, loops, complexities, etc. ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे. डिजाइन स्ट्रैटेजीज. देखिए, फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, देयर कैन बी मल्टीपल अप्रोचेस. आपको तो पता है कई अप्रोचेस से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को. तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम व्हाट डेवलपर्स और यू कैन से द प्रोग्रामर्स और द प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैव डन इज, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव मेड सम स्टैंडर्डाइजेशन इन द स्ट्रैटेजीज, सम स्टैंडर्ड अप्रोचेस of solving the problem, जिसे हम बोलते हैं design strategies. One of the important design strategy is a very old and basic strategy called divide and conquer, right? Divide and conquer, जिसे मैं अपने short notation में generally लिखता हूँ DC, divide and conquer, is one of the primitive strategy. Almost इसके जितने भी problems हैं ना, वो basically are most of the problems you have done already in your first level course of programming. ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बता रहा हूँ. तो पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज द जनरल वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जनरल मेथड, वेयर यू ट्राई टू शो द कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, कि कैसे दैट स्ट्रैटेजी वर्क्स, डिवाइड एंड कॉन्कर. ठीक है, जनरल मेथड. फिर उसके बाद दीज आर ऑल केस स्टडीज टू शो हाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल बाय डिवाइड एंड कॉन्कर, हाउ डिफरेंट प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड विद द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर. जैसा प्रॉब्लम है मैक्स मिन प्रॉब्लम, लाइक यू आर गिवन ए अरे ऑफ say for example, right, so we are given an array with n elements and we have to determine the largest and the smallest element in this, right, in this given set of n elements. How do we find that? We can have non-divide and conquer method, we can have divide and conquer method, right? So that is called max min problem. So that we will discuss in the crash course, don't worry. Then we have merge sort, and then we have binary search. So already these problems are known to you: max min problem, merge sort problem, binary search problem. Then you have quick sort. Then we have matrix multiplication. So with approaches like divide and conquer method and Strassman's method. So if you see the list of problems, almost all the problems are known to you, except that we are trying to only show you here कि कैसे ये problems में divide and conquer strategy define होगी, right? So my advice to Mr. Pawan Kumar is you please try to understand what is the meaning of crash course. So fundamentally I believe that you have that common sense, right? You have that common sense to understand what is the meaning of crash course. This is not a full-fledged course, this is rapid revision course, please. I hope you are knowledgeable with regard to what I am saying. Okay, that's what I have to tell with regard to your comment. Shreshth's method. Then there are other problems also. Generally जो students नहीं पढ़ते, right? नहीं पढ़ते प्रॉब्लम, ये मैं चाहूंगा कि आप पढ़ें. मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा ये प्रॉब्लम का, जिसे मैं शॉर्ट में लिखता हूं LIM, लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, राइट? लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर दो लॉन्ग इंटीजर्स है आपके पास, आप उसे डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड से कैसे पढ़ाओगे, राइट? कैसे सॉल्व करोगे लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन. So that is the meaning of this problem of long integer multiplication. फिर उसके बाद एक shortcut method है for solving divide and conquer recurrences. This is a shortcut method. Generally, when you solve problem using divide and conquer method, remember this point. When you solve problem based on divide and conquer method, right? What happens is the time complexity of all such problems is described by what is called divide and conquer recurrences. ये हम देखेंगे. How can we describe the time complexity of problems solvable by divide and conquer method using recurrences, right? Divide and conquer recurrences. So divide and conquer recurrence जब आप
I say in my own terminology, this is just like, for example, mathematical modeling of the problem. जैसा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है हो या लॉन्ग इंटीजर मल्टीप्लिकेशन हो, बाइनरी सर्च हो, मर्ज सॉर्ट हो, क्विक सॉर्ट हो, वट एवर you are trying to do its performance or behavior through a mathematical recurrence, right? Mathematical recurrence. So once you derive a mathematical recurrence representing the time complexity of that problem, फिर आप वो recurrence को कैसे solve करोगे so that you get a mathematical function, right? So there are two approaches basically. One is back substitution. One approach is back substitution, and the other approach is basically the master method. मास्टर मेथड. और भी एक अप्रोच है जिसे हम रिकर्शन ट्री अप्रोच बोलते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये चाहूंगा फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंसिव पर्पस ऑफ गेट प्रिपरेशन, आई वांट ईच वन ऑफ यू गेट एस्पिरेंट to make yourself well comfortable, well clear, right, with respect to these three approaches of solving divide and conquer recurrences. शायद हम back substitution करें थोड़े बहुत we can do the problem with master method also, and if time permits, I don't promise, but if time permit, definitely for you I will also try to show you how recursion tree approach is used for solving the problems. Raj, I have been, see, I also would love to teach only in English, लेकिन ये बैच है Hinglish, so मुझे comply करना पड़ेगा the company rules को, so that I have to teach in English. हाँ, कुछ exclusive batches है English के, आप वो बैच ज्वाइन कर सकते हो. उसके डिटेल्स आपको PW साइट पे मिलेंगे, आप वहाँ पे जाइए, देखिए, and then you can. But this batch is English batch, Hindi plus English. I'm sorry if I offend you, लेकिन I have to abide by the rules of the companies. ठीक है? Okay. Prashant, with regard to your comment, and Ras, with regard to your comment, I have to tell. Okay, thank you students. I mean, don't bother about comments, etc. All kinds of people will be there. We don't have to really care. We have to focus. As I said in my last class of operating system yesterday, we should not get distracted. Let us keep our own focus and let us try to basically improve our efficiency and throughput of the lecture. मुझे बहुत important है. I don't want to waste my time, right? Limited time में हमें कितना अच्छा cover करना है, we'll try to do that, right? So back substitution method, master method, and recursion tree method. So I will try to basically talk about almost all the methods so that you can concentrate, you can understand this. But I would like, from the perspective of GATE exam preparation, I am once again re-emphasizing that basically you have to concentrate on all these three approaches thoroughly, because there are certain recurrences. Believe me, my dear students, there are certain recurrences which you can solve very well with only recursion tree. Better approach. Like I say in my own terminology, those which are non-uniform. Some recurrences are uniform type, some are non-uniform type. So जो भी recurrences are of non-uniform types, right, that can be effectively solved using recursion tree approach. तो recursion tree approach भी आप अच्छा familiarize कीजिए, master method भी अच्छा remember कीजिए, and substitution method मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा. That's a very I would, in my own terminology, I would call it as universal method. Substitution method is universal. So at any cost, I expect that each one of you must be definitely familiar with back substitution method. क्योंकि अगर आप back substitution method अगर understand कर लोगे ना, तो any kind of recurrence you can solve. You don't have to remember any cases like master method, or you don't have to remember the recursion tree approach. So universal method है, back substitution method, at any cost you remember, and there are certain recurrences which you can follow, which you can solve, use master method to solve more effectively with master method and recursion. You can do that, there is no problem. चलिए, फिर उसके बाद recursion tree, वही मैं आपको बताया, recursion tree method. Then problem solving you can do with regard to divide and conquer strategy. तो ये important problems है. तो जनरली जब मैं फुल फ्लेज कोर्स लेता हूं तो ये पूरे प्रॉब्लम्स सॉल्व करता हूं. देखेंगे हम क्रैश कोर्स में कौन से प्रॉब्लम्स हम कर पाएंगे. जो भी नहीं करे, लाइक एटलीस्ट आई वुड मेक श्योर दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द प्रॉब्लम, सो दैट यू कैन प्रिपेयर इफ यू हैव नॉट डन. ठीक है, चलिए.
फिर सेकंड डिजाइन स्ट्रैटेजी जो हमें जो गेट सिलेबस में है वो है ग्रीडी मेथड, वो है ग्रीडी मेथड, ग्रीडी मेथड. So this is also a very simple strategy for solving most of the optimization problems in general. तो पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा. एक यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस. मैं वो भी टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंट्रोड्यूस करूंगा क्रैश कोर्स में भी. So that terminology will help you to understand the paradigm. Paradigm मतलब process, method. Paradigm of greedy method as well as dynamic programming both. तो एक टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे हम बात करते हैं जनरली लाइक प्रॉब्लम डेफिनेशन, the concept of constraints, right? Implicit constraint, explicit constraint, solution space है, फिर feasible solutions, objective function, optimal solution, ये पूरा terms हम define करेंगे by taking case studies. फिर उसके बाद general method देखेंगे, that is the general procedure of solving the problems based on greedy method. ये एक fundamental technique है जो हम generally day to day life में भी use करते हैं in many cases. तो हम उसकी भी बात करेंगे general method. फिर उसके बाद है केस स्टडीज. दीज आर ऑल डिफरेंट केस स्टडीज ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हिच आर सॉल्वेबल बाय ग्रीडी मेथड, व्हिच आर सॉल्वेबल बाय ग्रीडी मेथड. जैसे हम स्टार्ट करेंगे विथ नैपसैक. जनरली इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स ऑफ एल्गोरिथम्स, ग्रीडी मेथड के लिए वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम दे ट्राई टू एक्सप्लेन इज नैपसैक प्रॉब्लम, के नैप. सो वी विल डिफाइन व्हाट इज नैपसैक प्रॉब्लम, टाइप्स ऑफ नैपसैक प्रॉब्लम एंड हाउ कैन बी सॉल्व problem of knapsack with multiple strategies, multiple greedy strategies, and among them which is most efficient also we'll see. फिर और एक प्रॉब्लम है JSD, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइंस, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. एंड देन ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न्स, उसमें एक उसका एक सबसेट प्रॉब्लम है जिसे हम कहते हैं हफमन कोडिंग. So many questions, many numericals were asked based on Huffman coding, which is basically a encoding technique. Encoding is done in such a way that it leads to data compression. That is the beauty of this. So ये भी हम देखेंगे. How is encoding done with Huffman coding and how is compression achieved with Huffman coding. फिर एक one of the most important problem within greedy method is minimum cost spanning trees, MCST. काफी number of questions, enormous questions were asked in earlier papers on this aspect, and this is an overlapping topic. Generally आप graph theory of discrete mathematics में भी minimum cost spanning tree के ऊपर problems topic पढ़ते हैं generally. This is an overlapping topic. Yes, file structures में Alok Pandey, you are right. So minimum cost spanning tree is generally used, generally comes in as an overlapping topic in the subject of discrete mathematics. There are many real life applications of minimum cost spanning tree. Real life applications. It is used in networking, it is used in the design of electronics and electrical circuits, etc. So there are two popular algorithms. Not too popular, I would say there are three algorithms for minimum cost spanning tree. Generally in the textbooks of algorithms आपने पढ़ा होगा Prim's method, Kruskal's method. लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि there is one more algorithm for minimum cost spanning tree, that is called Dijkstra-Kalaba algorithm. अगर आपने ना देखा हो पहले तो आप नोट करके रख लीजिए, बाद में पढ़िए इस एल्गोरिथम के बारे में. Dijkstra-Kalaba algorithm for minimum cost spanning tree, because इसके बेसिस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन अर्लियर पेपर ऑफ गेट. ठीक है, Prim's and Kruskal's तो कॉमन है, तो कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन Prim's and Kruskal's मेथड, ये भी आपको देखनी है. फिर उसके बाद जो लास्ट प्रॉब्लम है जो ग्रीडी मेथड का, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, जहां पर Dijkstra's famous algorithm for single source shortest path we study. So that is another very very important question. Not only important from gate perspective but also आपको पता होगा कि नेटवर्किंग में भी ये algorithm यूज किया जाता है, particularly in the layer, network layer में, जहां पर आप परफॉर्म करते हो फंक्शन रूटिंग, right? Yeah, Nom Prakash will try to do that. Negative weight edges, negative weight cycle की भी हम बात करेंगे, don't worry. So single source shortest paths, Dijkstra single source shortest paths. It is used in networking, particularly for shortest path routing. के लिए आप ये Dijkstra algorithm use कर सकते हो. So that is this, and then you have general problem solving. So my dear student, these are the list of problems which you can study from the greedy method, greedy approach. लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेलमैनफोर्ड इज ऑल्सो देयर, दैट इज इन डायनामिक प्रोग्रामिंग. विकास मैं बताऊंगा, आप इस आगे की स्लाइड में आएगा, डोंट वरी. देखिए
मैं आपको जस्ट एक एनालॉजी के टाइप में आपको एप्लीकेशन का व्यू पॉइंट से बता रहा हूं कि ग्रीडी मेथड इज ए जनरल अप्रोच विच इज ऑल्सो यूज्ड इन मेनी सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस. जैसे कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्स किया. So those of you who have attended my operating system course, can you tell, let me see how many of you are able to apply it. Can you tell some of the operating system problems which are essentially solved using greedy method? अगर आपको greedy method पता हो, assumingly that I am asking you this question, I say myself that there are certain problems of operating system which are essentially effectively solvable or solved by greedy strategy. क्या कौन से प्रॉब्लम्स है, क्या कोई बता सकता है? फॉर एग्जाम्पल कौन से प्रॉब्लम्स है विच आर सॉल्व बाय ग्रीडी मेथड? No, not dining philosopher, not semaphore, not resource allocation. Think carefully. Greedy approach, not deadlock. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम बता रहा हूं मैं इब्राहिम. इट इज नॉट नैपसैक प्रॉब्लम. नैपसैक प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ग्रीडी मेथड. कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम इज सॉल्व यूजिंग ग्रीडी अप्रोच? नॉट राउंड रॉबिन. थिंक केयरफुली. शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, SJF. वी आर ग्रीडी अबाउट सेलेक्टिंग दैट जॉब विच इज हैविंग लीस्ट बर्स्ट टाइम. फिर और एक भी प्रॉब्लम है जो हमने सॉल्व किया, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, डिस्क शेड्यूलिंग, जो हमारी लास्ट टॉपिक थी कल के लेक्चर की, पिछले लेक्चर की लास्ट टॉपिक जो थी डिस्क शेड्यूलिंग, उसमें एक प्रॉब्लम था शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट. तो दीज आर एसेंशियली बेस्ड ऑन ग्रीडी मेथड. उसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन द सब्जेक्ट ऑफ नेटवर्क्स, इन द सब्जेक्ट ऑफ DBMS particularly, we most often use greedy method also for solving some of their problems. So therefore, what I am saying, greedy method is a general approach of solving problems used in different subjects, used in different domains. ठीक है? तो यहाँ पर सिर्फ एक केस स्टडी है जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एंड द लास्ट डिजाइन स्ट्रैटेजी इज डायनामिक प्रोग्रामिंग, जिसे हम शॉर्ट में जनरली लिखते हैं. इंडस्ट्री में भी लोग जनरली बताते हैं लिखते हैं DP, डायनामिक प्रोग्रामिंग, इन शॉर्ट. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट, लेकिन इंटरव्यूज परस्पेक्टिव से जब आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जाते हो, पर्टिकुलरली फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, देन दे पुट क्वेश्चंस, दे गिव यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम डायनामिक प्रोग्रामिंग. So understanding the paradigm of dynamic programming is very important. What is the difference between dynamic programming and greedy method? What is the difference between dynamic programming and divide and conquer? That we have to see. So a sort of relation hai that we have to basically understand between divide and conquer, greedy method and dynamic programming. What problems cannot be solved with greedy method and which can be solved with dynamic programming? ये भी हमें देखना है. So we understand that method basically. Then as I said, we need to understand the difference between dynamic programming, greedy method and divide and conquer. All the three. Okay? And then these are the different problems which you need to prepare from the GATE exam perspective. आपको prepare करनी है from the GATE exam perspective from the domain of dynamic programming. जैसे है multi-stage graphs, traveling salesperson, short में हम लिखते हैं TSP, very important problem. Binary knapsack, 0-1 knapsack जिसे हम बोलते हैं. All pair shortest paths, Bellman-Ford algorithm, right? All pair shortest paths. Then, Bellman-Ford algorithm for single source shortest paths. Sorry, not Bellman-Ford. Then longest LCS problem, longest common subsequence. Does anybody know what is the name of all pair shortest path algorithm? All pair shortest path is also called Floyd-Warshall. 3 algorithms are there. Floyd-Warshalls. Yes. Jaskaran Singh, you are right. All pair shortest path is Floyd-Warshall. Single source shortest path, there are 2 algorithms. One is Dijkstra, the other is Bellman-Ford. Floyd-Warshall, that's right. Longest common subsequence, this is a string related problem and very important, LCS. So that is the longest common subsequence. Then we have matrix chain multiplication, MCM, or we generally call MCP, matrix chain product. It is a problem related to matrices. कि आप कैसे matrices को
मल्टीप्लाई करोगे विच आर जनरली नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस. सो हाउ टू मल्टीप्लाई नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस? अगर स्क्वायर मैट्रिसेस हो वी हैव अप्रोच इन डिवाइड एंड कॉन्कर. अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस हो तो आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे? यस, दैट्स राइट. सम प्रॉब्लम can't be solved by greedy, so you have to use dynamic programming. That's correct. Then we have sum of subsets. देखिए ऑल दीज प्रॉब्लम्स, पिछले प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे, मल्टी स्टेज ग्राफ, ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन, बाइनरी नैपसैक, ऑल पे शॉर्टेस्ट पाथ, बेलमैन फोर्ड, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, all these problems are optimization problems. Optimization का मतलब यह है कि you try to maximize or minimize something. Yes, Prashant Prabhakar, you are right. It is a genetic algorithm, absolutely correct. It is used in genomes, genetics. You are correct, Jaskaran. We'll talk about it, don't worry. कि कौन से केसेस पे डाइकेस्ट्रा फेल होगा, कौन से केसेस पे बेलमैन फोर्ड फेल होगा, राइट? When we'll discuss, don't worry. Just be patient. Sum of subsets is a decision problem. Decision problem मैं बाद में आपको बताऊंगा डिटेल में, यहाँ पे खाली एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं मैं. Optimization problems will have the characteristic that you would like to maximize or minimize something. लेकिन decision problem की characteristic ये रहती है कि you would like to basically, I mean the output of that algorithm or that problem is either yes or no, true or false. ये है decision, right? Decision problem की characteristic ये है. There is nothing that you would like to minimize or maximize. Decision problem की characteristic है the result of that is either yes or no, true or false. जैसे कि search problem, searching problem का result क्या होगा? Yes or no, true or false, right? Element is existing और आप बोलेंगे element is not existing, उसे हम बोलते हैं decision problem. तो sum of subsets is a decision problem. मतलब यह है कि डायनामिक प्रोग्रामिंग कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड आल्सो सम ऑफ द डिसीजन प्रॉब्लम्स. सो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. वैसी तरह और एक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है प्रॉब्लम, रिलायबल सिस्टम डिजाइन, और इन शॉर्ट समटाइम पीपल इवन कॉल इट एज रिलायबिलिटी डिजाइन. ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है. फिर उसके बाद और एक प्रॉब्लम है ऑप्टिमल कॉस्ट बाइनरी सर्च ट्री और सिंपली बाइनरी सर्च ट्री प्रॉब्लम. इट्स एन ओवरलैपिंग टॉपिक. बाइनरी सर्च ट्री के बारे में आप डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़े होंगे, तो यहां पर हम बाइनरी सर्च ट्री के एक डेफिनेशन या मैं बताऊंगा. राज डोंट वरी, आई विल टॉक अबाउट प्री रिक्विजिट, आई विल टॉक अबाउट टेक्स्ट बुक, एवरीथिंग, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. जस्ट हैव सम पेशेंस, ठीक है? आई रेड योर कमेंट. सी I mean generally I am a sort of like, what do you say, a bit serious person. So smiling उतना मेरा face पे भी नहीं है उतना, ठीक है? So you are saying that sir keep smiling face. I mean that is my nature. So I'm generally don't laugh or smile much. So kindly bear with me. I'm sorry if I hurt you. Okay? Yeah. Binary search tree. तो यहाँ पर हम देखेंगे mainly the construction part. How to construct. ये जो कंस्ट्रक्शन होगा, दिस विल बी प्योरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, और यू कैन जनरली कॉल इट एज व्हाट डू यू से, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमैलिटी. हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमल कॉस्ट बाइनरी सर्च ट्री, राइट? यू कैन ऑल स्टार्ट, आई मीन कॉल इट एज ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है? So this is binary, I mean the problem list of problems. So my dear students, फिर से मैं आपको वही emphasize कर रहा हूँ, ये complete list है. At least I would say that for a efficient gate preparation आपको चाहिए कि जितने problems मैंने यहाँ पर list किए, of course we will not be able to deal with all these problems in the class, लेकिन आप अपने लेवल पर, अपने पर्सनल लेवल पर make sure that you are well versed with all these problems so that you can crack the GATE exam algorithm paper effectively with 100% probability. All these problems. कोई भी एक प्रॉब्लम मत छोड़िए. इस बेसिस पे ये तकरीबन पूरे प्रॉब्लम्स के बेसिस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पहले आ चुके हैं और शायद आगे भी आएंगे, राइट? ठीक है. फिर उसके बाद देयर आर सम सप्लीमेंट्री एल्गोरिथम्स. There are some supplementary algorithms, supplementary topics in the course of algorithm which you study, and these are overlapping topics, I say, in overlapping with data structures. So देखिए आप यहाँ पर
कौन से टॉपिक्स है वो? एक है ग्राफ एल्गोरिथम्स। लाइक यहां पर वी आर नॉट गोइंग टू लर्न व्हाट इज ए ग्राफ एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राफ, ठीक है। वी आर गोइंग टू बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ऑन टू एस्पेक्ट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। आपने डेटाबेस में पढ़ा होगा, डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, सॉरी, कि देयर आर टू रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ग्राफ, वन इज कॉल्ड सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन and the other is linked representation. The sequential representation of graph is known as dash. Fill up the dash. Geeta Kumari, Geeta Karnani. You can prepare on your own. I mean, these are the questions which are not to be asked here. Geeta, come on, don't spam. Right? I don't know, some people are very, very careless here in the class, right? Non-serious students. I am so sorry. I will have to tell the admin to take care of you. Please. Sequential representation is known as adjacency matrix representation. Adjacency matrix. Very good. Some people have said. Sritam Swain, very good. Yes, we'll ignore it. Definitely Om Prakash, we'll ignore. No, my point is I'm trying to read your comments so that I can focus, make more sort of interaction, but I'm getting today some irresponsible comments, right? Linked representation. What is linked representation? What is the meaning of linked representation? No problem, Geeta, no problem. Just be attentive. I will try to answer your question at the end, don't worry. Linked representation. What is a linked representation of graph known as? Yes. It is called adjacency list. So you should have the understanding. You should have understanding between how to represent a graph through sequential representation or linked representation. That is the first thing you should know. Then next, graph traversals. Data structures में आप पढ़ोगे, लेकिन from algorithmic perspective, please my dear students, I would be very happy if you try to see what I have written here. अगर आपने पूरे ग्राफ ट्रैवर्सल डेप्थ फर्स्ट सर्च ये अगर मोड में नहीं पढ़े हैं पहले, तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, आप ये पूरे पढ़ें, क्योंकि कुछ मैं एक टॉपिक लूंगा, मैं क्रैश कोर्स में भी ग्राफ एल्गोरिथम, पर्टिकुलरली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ट्रैवर्सल्स. I will touch upon all this. How to perform depth first search on undirected connected graphs, undirected disjoint graphs, that is called DFT, depth first traversal. And then directed graphs and types of edges. कैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च आप परफॉर्म करोगे ऑन डायरेक्टेड ग्राफ्स, DAG, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. इस भी एक स्पेशल ग्राफ भी है, देखिए यहां पर है, ऑन DAG, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ्स. Particularly when you perform DFS on directed acyclic graphs, it will lead to a sequence called topological sort. Many questions in earlier papers on topological sort. So ये भी बहुत important topic है from GATE exam perspective. So make yourself well comfortable with all the DFS on directed connected graph, undirected connected graph, undirected disjoint graphs and DAG. चलिए आगे देखते हैं breadth first search. Again breadth first search. There are three different types of breadth first search. One is FIFO BFS. क्योंकि आप जो डेटा स्ट्रक्चर breadth first search के लिए यूज करोगे, जो डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे वो होगी Q. Q के ऊपर you can follow three disciplines generally. Default discipline is FIFO. Then you can even have LIFO discipline on Q. Most of you don't know, but it is there, right? LIFO. LIFO discipline can also be applied on Q, and you can follow priority discipline on Q. So accordingly, we have three types of breadth first search. We call FIFO breadth first search, we call LIFO breadth first search. This is also called D search. This is also called D search, depth search, not depth first search, just D search. And then priority BFS is called LCBFS. This is priority Q. It follow priority discipline. So if I follow priority discipline on Qs, then the resultant breadth first search is called LCBFS, least cost BFS. ठीक है? So that is the meaning of it. फिर उसके बाद एक theorem है which is basically a consequence to depth first search and breadth first search, जिसे हम बोलते हैं parenthesization theorem, not parameterization. They have typed wrongly. Here I am writing it.
parenthesization theorem. It is related to parenthesis, right? Parenthesis. So that will, the advantage of this parenthesization theorem is that you can classify different types of edges, ये बहुत important points है, please. I don't know in your regular preparation you have done all this or not, but it is required. GATE 2022 या 2021 में there was a question on types of edges, and it was asked earlier also many times. So therefore you need to get yourself a complete familiarity of this framework of depth first search and breadth first search. ये अगर आप पूरा जिस order में मैंने लिखा है अगर पढ़ेंगे तो then I'm very sure that you can work out any questions of this. Then in this framework we also talk about different timing values जिसे हम बोलते हैं discovery time, finishing time, right? So that concept also there were questions in earlier papers. आप depth first search, breadth first search with timing values पढ़ना होगा, right? ठीक है. फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लीजिए. फिर और एक ओवरलैपिंग टॉपिक है जिसे आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, एल्गोरिथम में भी आएगा. So from algorithmic perspective, I would appreciate if you follow the following heap algorithms. Algorithm for creating a heap, insert heap, deleting an element, inserting an element, deleting an element, modifying. This is called update the key. Creation के दो algorithms है, insertion method and heapify method. Heapify method is also called method of adjust, or also called build heap method. So that is two methods. How to insert an element into an existing heap, how to delete an element from an existing heap, how to modify, right? That is update the key of one of the element of heap, algorithm for that and its complexity. इसका एक application है heap sort, वो भी आप algorithmic perspective से देख सकते हो. So this is a small topic dealing with heap. Many numerical questions or algorithmic questions, conceptual questions were asked on heap. So that is the heap chapter. इसके बाद एक ओवरलैपिंग टॉपिक है. एक्चुअली अगर आप गेट का सिलेबस देखोगे तो हैशिंग इज डिस्कस्ड, हैशिंग इज पुट इन द एल्गोरिथम पार्ट, लेकिन हैशिंग इज आल्सो पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, यू नो. So from algorithmic perspective, I basically consider the following points, the following topics that you have to prepare for GATE exam and in general for hashing, because जब आप competitive programming करोगे, right, hash map tables is a very important data structure. उसके लिए ये concepts बहुत ज़रूरी है. You should know how the hash table or hash map table is organized. What are the different classifications of hashing techniques? Collision is one of the important aspect of hashing. So how to deal with collision, particularly like closed hashing or open hashing, and then comparison of both along with necessary problem solving. Previous GATE questions में काफ़ी questions आ चुके हैं from hashing. So therefore this is also an important topic. अब इसके बाद थोड़े ऐसे topics हैं जो मैं यहाँ पर list कर रहा हूँ जो actually specifically explicitly GATE exam है. Please everybody follow this. Actually अब जो topics मैं बता रहा हूँ आपको, they are not particularly discussed in the syllabus of GATE, ठीक है, लेकिन some topics of GATE, some syllabus of GATE require this topic to understand. जैसे कि दो topics मैं आपको बता रहा हूँ, एक है Kruskal's algorithm और एक है biconnected components, जो हम graph traversals में use करते हैं, biconnected as applications of traversal. तो वो algorithms में ये data structure along with their operations use किए जाते हैं in the implementation of those algorithms. Algorithm of Kruskal and algorithm of biconnected components and articulation points में ये हम data structure को use करते हैं जिसका नाम है sets. अगर आपने पहले ना पढ़ा हो तो मेरी आपसे ये request है कि please, this will not take hardly, मैं बोलूँगा आपको, आप 2 hours अगर spend करेंगे, you can learn about this data structure. Maybe 1.5 to 2 or not more than that. I can guarantee you. पढ़िए please. Sets. ठीक है? Then in this you have to understand the representations. How do you represent the set? What are the representations? There are 2 approaches. You can represent it in the form of trees or you can represent it in the form of an array. Both representations are there. फिर उसके बाद predominantly operations on sets are important. जो दो fundamental important operations है वो है union and find. Right? Union and find. Union is combining 2 sets. Find operation is going to return the root of the set, or that is also called representative of the set. ये दोनों operations are used
in the implementation of Driscoll's algorithm and bi-connected components and articulation points as applications of depth first search. So again I am re-emphasizing my dear students कि आप basically अगर ना पढ़े हुए टॉपिक तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और पर्टिकुलरली जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काफ़ी यूज़ होती है टॉपिक, सेट डेटा स्ट्रक्चर एंड देयर ऑपरेशंस, ठीक है। उसी तरह सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, राइट, आई मीन दिस इज ऑल्सो एन ओवरलैपिंग टॉपिक। आप फर्स्ट लेवल कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग में भी पढ़े होंगे और फिर जनरल डेटा स्ट्रक्चर्स में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम गेट एग्जाम परस्पेक्टिव वी जनरली इंट्रोड्यूस सम बेसिक टर्मिनोलॉजी. That means the classification of sorting techniques. How are classing techniques classified? Internal sorting, external sorting, and then comparison based sort, non-comparison based sort, stable versus unstable sort, in place versus not in place sort. Like that, some classification. So that terminology classification we introduce, like the concept of inversions. Then sorting method generally. There are innumerable sorting techniques, and predominantly, yeah, that will come. Predominantly, these are some of the sorting techniques जिसके basis पर previous papers में काफ़ी questions आ चुके हैं, जैसे कि primitive technique है bubble sort, selection sort, insertion sort, radix sort, etc. In addition to that, अगर आप कोई भी data structures की book देखेंगे, वहाँ पर और भी आपको sorting technique मिलेंगे, आप चाहे तो पढ़ सकते हो। अगर आप ignore करें, सिर्फ ये sorting technique plus merge sort plus quick sort पर अगर आप focus कर लेंगे, I assure you that should be more than sufficient enough from GATE exam perspective. हर sorting technique की आप performance analysis अच्छी तरीके से remember कीजिए, अपने short notes में लिख लीजिए, अपने short notes में, जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस में क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या है। जैसा कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट इज व्हाट? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, कम ऑन, एनीबॉडी रिमेंबर? डज एनीबॉडी रिमेंबर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट? Selection sort has a very important property. What is it? Which other sorting technique does not exhibit or does not follow? What is that important property of selection sort? Very good, Chanchal. Least number of swaps. It requires least number of swaps, number of exchanges. In which case? That is very important, Chanchal. In which case? In place तो काफी algorithms है, काफी Selection sort has a very important property. This was asked also as a GATE question. List swapping, least number of swaps, in which case? ये बहुत important है. In which case? In worst case. Worst case. Which is order of n. Order of n. Least number of swaps in worst case, order of n. वरना अगर आप दूसरे एल्गोरिथम देखोगे, दूसरे सॉर्टिंग टेक्निक्स देखोगे, जैसा कि क्विक सॉर्ट है, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा उसका नंबर ऑफ स्वैप्स। मर्ज सॉर्ट है, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होंगे। हीप सॉर्ट है, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है, लेकिन वर्स्ट केस इंपॉर्टेंट है। वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन स्वैप्स इज नीडेड बाय सिलेक्शन सॉर्ट, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक। उसी तरह इंसर्शन सॉर्ट की भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, इसका एक एडवांटेज है ओवर बबल सॉर्ट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Like that, other sorting technique like radix sort. What is the characteristic of radix sort? Does anybody know? Let us see. Does anybody know what is the characteristic of radix sort? Come on, boys and girls. Radix sort की characteristic क्या है? Yes, let me see. What is the characteristic of radix sort in comparison to other sorting techniques जो यहाँ पर लिस्ट आउट किए गए हैं? प्लस यू कैन ऑल्सो टेक लाइक मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट इन टू दिस लिस्ट इन कंपैरिजन टू दैट। हाँ, लीनियर टाइम तो है, लेकिन दैट इज नॉट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। चंचल इज राइट, इट इज नॉट स्टेबल, इट इज नॉट लाइक स्टेबल, दिस इज नॉन कंपैरिजन बेस्ड, नॉन कंपैरिजन बेस्ड, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। Selection sort, insertion sort, bubble sort, heap sort, quick sort, merge sort, these are all comparison based sorts. They are all internal sorts, except for insertion which can work like external. लेकिन radix sort की important property है कि वो non comparison based. Without comparing elements you can sort using some buckets.
राइट, इंप्लीमेंटिंग लिंक लिस्ट। जनरली आप एक बात याद रख लीजिए हमेशा, जनरली जितने भी नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट्स है, जैसा रेडिक सॉर्ट है या एड्रेस कैलकुलेशन सॉर्ट है या और भी कुछ बकेट सॉर्ट्स है, तो दीज नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट्स की प्रॉपर्टी ये है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेस, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेस, दैट इज अ ड्रॉबैक एंड दैट्स व्हाई वी डोंट प्रिफर टू यूज देम। और भी कुछ ड्रॉबैक्स है नॉन कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट का, विल नॉट गो राइट नाउ, मे बी इफ टाइम परमिट्स विल सी एट लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, उसके बाद लास्ट में एक सप्लीमेंट्री टॉपिक मैं अपने तरफ से जनरली सजेस्ट करता हूं स्टूडेंट्स को, इज नॉट मैंडेटरी, आई वुड कॉल इट एज सप्लीमेंट्री, एज ए सप्लीमेंट। देखिए, इन द जनरल कोर्स ऑफ एल्गोरिथम्स DAA, जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ोगे या कॉलेज लेवल पे जब कोर्स को पढ़ोगे, तो यू हैव 5 स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट इज डिवाइड एंड कॉन्कर, सेकेंड इज ग्रीडी मेथड, थर्ड इज डायनामिक प्रोग्रामिंग, फोर्थ इज बैक ट्रैकिंग, fourth is backtracking, and fifth is branch and bound. Branch and bound. ये 5 strategies generally algorithm course of all universities होंगे, लेकिन गेट एग्जाम में सिर्फ you have these 3 discussed or described very explicitly. ये strategies के बारे में नहीं बताया गया गेट एग्जाम में, backtracking and branch and bound, इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, right? I'm coming to that. Don't worry, right? So backtracking and branch and bound, these 2 topics. I do remember in one of the very old paper of GATE, in one of the options of the question, please follow me what I'm saying, in one of the options of the question, they mentioned backtracking. Question तो नहीं पूछा गया backtracking के ऊपर, लेकिन एक option था, एक question का option था backtracking। तो इसी लिहाज से मैं ये जनरली कहता हूं स्टूडेंट्स को, इवन दो नॉट नेसेसरी, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूं पर्पसफुली कि दिस ओनली ए सप्लीमेंट्री टॉपिक। अगर आप अपने आप को फेमिलराइज कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा है, अगर ना भी करें तो कोई बात नहीं है फ्रॉम ए गेट एग्जाम परस्पेक्टिव। तो बेसिक बैकट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड टुगेदर आई एम राइटिंग, बेसिक टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड करना है आपको, इंट्रोडक्शन अलॉन्ग विद टर्मिनोलॉजी एंड ए कपल ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब ए कपल ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम है, सम ऑफ सबसेट्स प्रॉब्लम है, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन प्रॉब्लम है, एन क्वींस प्रॉब्लम है, हाउ डू वी सॉल्व यूजिंग बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड, ये है मेथड। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता रहा हूं, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जांपल फ्रॉम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव, क्योंकि अगर ये कोर्स आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव से करेंगे या पर्टिकुलरली कोडिंग के लिए जब आप जाएंगे, कॉम्पिटिटिव कोडिंग होने दीजिए या इंडस्ट्री असेसमेंट के लिए जो कोडिंग होगी, वहां पर जब आप एल्गोरिथम्स के लिए प्रिपेयर करोगे ना, तो 2 टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, वन इज डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड द अदर इज बैकट्रैकिंग। ये 2 टॉपिक्स के ऊपर आपको जनरली प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री इंटरव्यूज में, इंडस्ट्री प्रिपरेशन में, इंडस्ट्री असेसमेंट में, प्लेसमेंट्स के लिए, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड बैकट्रैकिंग। These 2 are very, very important from coding perspective, if not from examination, I mean university exam or gate exam perspective. From that perspective of coding, dynamic programming plus backtracking is primarily very, very important. So मैं ये चाह रहा हूँ, when you are making a long term preparation, अगर आपके पास कुछ टाइम है तो just spend some time, a couple of hours, 2 hours, and make yourself familiarize कि भाई जनरल अप्रोच कैसे होता है सॉल्विंग ए प्रॉब्लम विद बैकट्रैकिंग, सॉल्विंग ए प्रॉब्लम विद ब्रांच एंड बाउंड। अगर आप वो कर लेंगे then that is more than sufficient enough, right? So this is the detailed discussion of the syllabus of algorithm course from GATE perspective. अब आ जाएंगे हम 2 चीज़ों पर, एक है the prerequisites, जैसे कि some students were asking, so naturally we have to discuss what are the prerequisites. First, programming structures. मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि you should be familiar with C or C++ or Java, because many a times in algorithm we have to write the algorithm using some programming structures. जहां पर for example, marks we will discuss, don't worry. जहां पर we have to basically talk about the concept of loops, the concept of control statements. ठीक है, we write algorithm using all these functions etc. ऐसा ना हो कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती हो और आप एल्गोरिथम स्टार्ट करोगे तो परेशान हो जाओगे, जैसे कि इट हैपेंड इन वन ऑफ द
batch which I was teaching, weekend batch में recently, in one of the PW batch of weekend, it happened, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन लिख रहा हूं था मैं, वहां पर एक सिंपल आई हैव रिटन अ लूप फॉर i is equal to 1 to n like this, and then I wrote something here. So one student started asking, sir, what is this for loop? I was surprised, taken aback. कि भाई अगर आप for loop पता ना हो कैसे वर्क करेगा, right, तो then you cannot understand algorithm, you cannot follow algorithm. So my dear students, especially those, या भगवाधारी, I will come to it shortly. मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आ जाऊंगा, टेक्स्ट बुक पे भी बताएंगे, फिर उसके बाद हम एक ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स यू शुड बी फेमिलियर विथ। उसके लिए आप सी लैंग्वेज फॉलो कर लीजिए, C++ हो या जावा हो, जो भी हो, बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स आपको आना चाहिए। जब हम वाइल लूप लिखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वाइल लूप कैसे वर्क करता है, फॉर लूप कैसे वर्क करता है, एक्सेट्रा, कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैसे वर्क करते हैं, यू शुड बी फेमिलियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है डेटा स्ट्रक्चर्स। Without learning data structures, there is no meaning in understanding algorithms. क्योंकि फाउंडेशन है डेटा स्ट्रक्चर्स, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अरे, स्ट्रक्चर, स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, राइट, सेट्स। तो जब ही तो आप फिर एल्गोरिथम पर फोकस कर सकते हो, बिकॉज एवरी एल्गोरिथम यूज डेटा स्ट्रक्चर्स। तो आपको डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज भी होना चाहिए, इफ नॉट इन डेप्थ नॉलेज, एटलीस्ट पेरिफेरल नॉलेज, सो दैट यू नो what is a data structure, what are its elements, how is the element organized, etc. तो डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो मैंने पहले लिखा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेनी अ टाइम व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन एनालिसिस, असिम्प्टोटिक नोटेशंस, जब हम फॉर्मूलेज यूज करते हैं, शॉर्टकट्स अप्लाई करते हैं, तो पीपल गेट कंफ्यूज, सर ये कैसा आया। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जनरली आई आस्क, this function gets simplified to what? Can anybody write down? A simple question मैं बता रहा हूं मैं आपको, एक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग है। This function is simplified as what? This function looks like an exponential function, but in fact it is not an exponential function. एक प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हम यूज कर रहे हैं, तो आपको अगर पता ना हो तो मुश्किल हो जाएगी ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। Can anybody write this gets simplified as what? Very good, Prashant. Yes, Rahutullah Ansari, you are right. This is nothing but n square. यूजिंग प्रॉपर्टी, यहां पे दो प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं हम, राइट। एक प्रॉपर्टी है log a to power b of some base c is nothing but b into log a to base c, ये एक प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी है a पावर log b to base c is same as b पावर log a to base c, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये दो प्रॉपर्टीज यूज की जाती हैं ये एक्सप्रेशन में। तो यूजिंग दैट, दिस इज नथिंग बट ओनली n स्क्वायर। तो अगर आपको ये चीजें, प्रॉपर्टीज पता ना हो एज पार्ट ऑफ मैथमेटिकल बैकग्राउंड, देन डेफिनेटली यू विल हैव टफ टाइम इन एल्गोरिथम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, ये आप जरूर फॉलो कीजिए। जैसा फिर से एक बार लिख रहा हूं मैं, लाइक फॉर एग्जांपल द टॉपिक ऑफ लॉगरिथम्स, द टॉपिक ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है, एंड मोर प्रिडोमिनेंटली सम्मेशंस, द फॉर्मूलेज फॉर सम्मेशन सीरीज, सम्मेशंस। जैसा कि एक सिंपल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पर, देखेंगे, where many students generally make a silly mistake, देखेंगे how many of you also make a mistake here. Come on, I'm putting a very simple condition here. Sigma 1 I is equal to 1 to n is equal to dash. Yeah, complete functions, Raj. Knowledge about functions. Is equal to what? If, yeah, just Karan Singh, that's what I said. This is equal to order of dash, let me say. Those who are knowledgeable, even though I'm not assuming, those who are knowledgeable, sigma 1 I is equal to 1 to n is order of dash, fill up the dash. Fill up the dash. Come on, boys and girls, order of dash. Just to test summation concept. Bhagwadhari, be careful. Prashant Prabhakar, yeah, many people now are saying, Alok Pandey, you are saying constant. No, bhaiya, please check. Please check. The value of this summation is equal to n. The value of this summation is equal to n. Mistakenly, people generally क्या करते हैं? This they expand it like n is n into n plus 1 by 2. Actually, n into n plus 1 by 2 is sigma I. Sum to n terms. This is n is equal to n plus 1 by 2. And if you take the order of this is order of n square. This is order of n. तो ये बेसिक्स जो है समेशन के, ये आपको क्लियर क्लैरिटी होना चाहिए।
क्लैरिटी होना चाहिए। यस उसी तरह और एक अगर मैं फंक्शन लिखूं f of n इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 1 I इज इक्वल टू 1 to n इज ऑर्डर ऑफ डैश, ये बताइए, ये बताइए। ऐसे चीजों में कंफ्यूजन होगा, तो समेशन की नॉलेज क्लियर रखिए। सम टू सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ क्यूब्स, राइट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सिग्मा 2 power I, सिग्मा a power I, all that should be clear. Harmonic progression, sigma 1 by n. Yes, this is equal to how much? This is product of 1, I equal to 1 to n. This is nothing but 1 power n. 1 power n is always 1. So therefore it's a constant order of 1. ये important है. So that's what I said, summation series. So be clear with logarithms, exponents, summation series, right, formulas. And then a basic knowledge of differentiation and integration is also essential. Differentiation, integration. Like for example, when we say integral 1 by x, x equal to 1 to n. What is integral 1 by x? Log x. So these things you should know. You should be familiar. That is what I am trying to say. So basic knowledge of differentiation, integration plus some basis of matrices. जैसे कि determinant of a matrix जो आपको syllabus में भी है, correct? Syllabus में भी है. Determinant of a matrix, transpose of a matrix, right? And then eigenvalues, eigenvectors, plus more importantly cofactor of a matrix. जैसा कि हम टॉपिक जब लेते हैं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, वहां पर कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स एसेंशियल है टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज. यस, अभी आ रहा हूं मैं मैक्स डिस्ट्रीब्यूशन पर. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दीज आर द प्री रिक्विजिट्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्री रिक्विजिट हो गया आपके प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, मैथमेटिकल बैकग्राउंड. ये अगर आपका लर्निंग पाथ अगर हो, देन यू कैन जंप इनटू डेटा स्ट्रक्चर्स, सॉरी जंप इनटू एल्गोरिथम कोर्स. ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे टेक्स्ट बुक और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स. टेक्स्ट बुक्स, तो यूनिवर्सल टेक्स्ट बुक जो जनरली मेनी कॉलेजेस में फॉलो की जाती है, विथ समेशन भगवाधारी, यू आर सेइंग विथ समेशन, यहां पर 1 लिखा हूं मैं, करेक्ट है ये? इज राइट? नॉट आई, दैट्स व्हाट दिस 1 power n ना, 1 power n इज 1. 1 power n is 1. Yeah. चलिए, so textbook is introduction to algorithms. Introduction to algorithm, a very prominent, internationally acknowledged, you can say encyclopedia of algorithms, that is called Introduction to Algorithm by Corman. CLR textbook, CLRS, correct. Generally people in the industry also call it as CLRS textbook. ये पूरे ऑथर्स के नेम है, कॉर्मन एंड देन लाइसेसर एंड देन आर एंड एस ऑल्सो स्टैंड फॉर समथिंग. यस, CLRS. उसके बाद और एक भी एक टेक्स्ट बुक है जिसे मैं भी थोड़े टॉपिक्स फॉलो करता हूं, उसमें से फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स. फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स बाय होरोविट्स एंड साहनी. This is also a good book, Horowitz and Sahni. ठीक है, as the name implies, fundamentals. देखिए आप, तो my dear students, some students have said, sir, I am from EC, और किसी ने कहा मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ, मैंने पहली बार एल्गोरिथम पढ़ रहा हूँ. तो उनके लिए मैं ये करूँगा जनरली कि आप अगर फंडामेंटल्स से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद कॉर्मन रीड करेंगे तो आपको अच्छा है, वरना आप डायरेक्टली कॉर्मन से भी फॉलो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. आप डायरेक्टली एल्गोरिथम स्टार्ट कर सकते हो कॉर्मन टेक्स्ट बुक से, देयर इज नो इशू. लेकिन आप जब कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी दैट यू रीड एटलीस्ट 1 टेक्स्ट बुक. या तो कॉर्मन रीड कीजिए या साहनी रीड कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग द कोर्स, आई मीन व्हेन आई एम टीचिंग इन द फुल टाइम बैच, generally it will take not less than 55 to 60 hours to complete the course of algorithms. लेकिन ये crash batch है, this is rapid revision course, so we don't expect to teach each and everything. This is revision part. Yeah, Narasimha, I mean that is Narasimha textbook is basically from the perspective of interviews. Interviews के लिए अच्छी है, GATE exam के लिए उतना नहीं चलेगी. Narasimha Karamuchi. Yes, Narasimha Karamuchi is my student. Don't worry. So he is also a good book. That's also a good book, you can say.
Yeah, I mean, Sunil Chaudhary, as I told earlier, this is a crash course, rapid revision course, concentrating only on important topics. I told I will try my level best to touch upon each and every aspect because this is a revision course. Revision course. पूरा कंप्लीट करना मुश्किल है श्वेता पांडे, दैट्स इम्पॉसिबल, राइट? दिस इज अ क्रैश कोर्स वी सेड, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम में जितना हो सका हम करिए, उसी तरह इसमें भी हम करेंगे, राइट? या सो ये हो गया टेक्स्ट बुक। फिर उसके बाद और भी हम बात कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मार्क्स की। देखिए जनरली वेटेज जो होगा 6 to 8 मार्क्स एवरेज, एंड सम टाइम 10 to 12 with some integrated questions. Integrated का मतलब integrated with the subject like data structures. Data structures और algorithm के question मिला के 10 to 12 marks, sometime 14-15 marks भी आ चुके हैं. So therefore, never less than 6 to 8, and it can go beyond 10 to 12 or average 10 to 12 also. So therefore, in that regard, I say this is one of the important course of computer science and information technology. Algorithms, अगर आप और एक बात भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, या सुनील चौधरी, if you want to prepare for at least 7-8 lakhs package, then definitely you have to be very good with data structures and algorithms. Very, very important. ठीक है? And secondly, I would say the preparation that we are going to make with respect to GATE, right, will definitely help for other exams like ISRO and then TIFR. TIFR के लिए और थोड़ा complexity चाहिए for writing, attempting questions from TIFR exam with respect to this course. Plus, as I said, placements के लिए भी काफ़ी आपको help मिलेगी, ये जो GATE के लिए आप prepare करोगे for the course of algorithm. फिर all this it will be useful. All this it will be useful. Okay? And as I said, to prepare the full course by means of classes or by means of tutoring, definitely it will take, as I said, 55 to 60 hours along with necessary problem solving. Right? Otherwise, if you ignore the problem solving part, maybe you can complete between 45 to 50 hours this particular course. So this is a highly reasoning, logical course and mathematical oriented course. It is not like conceptual course like operating system, right? Operating system के जैसा नहीं है ये, या computer organization, database, computer networks की तरह नहीं है. यहाँ पर you require the mathematical skills, right? Particularly for analysis. You need logic and you need general problem solving abilities for solving the problems. Invariably, मैं generally students को ये बोलता हूँ कि this is basically like a learning algorithm is like learning any mathematical topic. Learning algorithms is just like learning any mathematical topic. जैसे आप integration है या differentiation है, आप understand करोगे, right? फिर वो basis पर आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, एंड यू कैन हैव एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कह रहा हूँ जैसा डिवाइड एंड कॉन्कर, डोंट थिंक दैट जो हमने प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए वही प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर. नो, जो प्रॉब्लम्स हमने ग्रीडी मेथड और डायनामिक प्रोग्रामिंग में लिस्ट आउट किए, ये जरूरी नहीं है कि उतने ही प्रॉब्लम्स है जो डायनामिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी मेथड से सॉल्व करोगे. नो, यू कैन सॉल्व एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स. टुमारो इन द एग्जाम यू कैन गेट इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स. ठीक है? तो ये बेसिस पर मैं आपको लास्ट पॉइंट ये कह रहा हूं कि आफ्टर योर गेट एग्जाम, दिस इज द लास्ट पॉइंट टू बिफोर वी स्टार्ट, लास्ट पॉइंट ये कह रहा हूं कि आफ्टर गेट एग्जाम इज ओवर, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स इज टू डू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम प्रॉब्लम और प्रोग्रामिंग. ये बहुत जरूरी है बिफोर यू गो फॉर इंटरव्यूज ऑफ IITs और अदर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट फॉर योर एडमिशन. ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपको काफ़ी डिफिकल्टीज होंगी इफ़ यू गो टू IIT डायरेक्टली विदाउट डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गो प्रोग्रामिंग. बिकॉज ये मेरा जनरल इंप्रेशन है, आई मे बी रॉन्ग, मेरा जनरल इंप्रेशन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज ऑफ टुडे दे आर नॉट गुड प्रोग्रामर्स. वो क्यों? कॉलेज में जनरली प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, राइट? इट इज़ माई ऑब्जर्वेशन. तो उस बेसिस पर मैं ये कह रहा हूँ, प्लीज आफ्टर योर गेट एग्जाम इज ओवर यू फोकस ऑन दिस. डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग का मेरा मतलब ये है कि आप कोई भी एक लैंग्वेज ले लीजिए, C++, जावा, पाइथन आई डोंट रिकमेंड, आई से C++, जावा, ये तीनों में से कोई एक ले लीजिए आप लैंग्वेज. वो लेने के बाद यू शुड इंप्लीमेंट ऑल डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसा स्टैक ऑपरेशंस है, क्यू ऑपरेशंस है, पर्टिकुलरली ट्री ऑपरेशंस है, लिंक लिस्ट ऑपरेशंस है. यू शुड बी एबल टू कोड देम ऑन योर ओन. आप अंडरस्टैंड कीजिए टेक्स्ट बुक से,
राइट या गेट में आप जो पढ़े हैं उसके बाद आप सेल्फ अपने तौर पर प्रोग्राम लिखिए. यू शुड बी एबल टू राइट द कोड ऑन द स्पॉट फॉर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू अ बाइनरी सर्च ट्री, क्रिएटिंग एन एवीएल ट्री, राइट, हैश मैप टेबल कंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन हैश मैप. ये सब बहुत जरूरी है. आप सी पे सी लेके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सी प्लस प्लस भी लेके कर सकते हैं. लैंग्वेज इज योर चॉइस, सी, सी प्लस प्लस, दैट्स व्हाट दीज टू आई वुड रिकमेंड फ्रॉम माय साइड. इवन दो आप जावा से भी कर सकते हो, आप जावा से भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत जरूरी. वैसे ही एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग का मेरा मतलब ये है कि एटलीस्ट सम प्रॉब्लम जो हमने लिस्ट किया है सिलेबस में, दोस प्रॉब्लम्स यू ट्राई टू बेसिकली इम्प्लीमेंट देम. दैट विल बी a good challenge as such, and that will really exhibit your programming skills. आपकी programming abilities improve होंगी, and then you will be able to solve problems, right? I mean, I teach algorithms in a pseudo language. It is a mix of C or maybe other languages like that. Because जब हम algorithm की बात करते हैं तो कोई programming की बात नहीं करते, कोई programming language की बात नहीं करते. फिर उसके बाद, ये होने के बाद आप क्या करेंगे, अगर आपके पास टाइम हो, then you can take some coding platforms like HackerRank, 𝐂𝐤𝐴, HackerEarth, etc. And then you can, okay, very good, you have 4 star on 𝐂𝐤𝐴, very good, excellent. तो आप कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म लीजिए, 𝐂𝐤𝐴 है, HackerRank है, LeetCode है, उसके ऊपर जाकर ये हो जाने के बाद तभी आप, अगर आप डायरेक्टली ये प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, HackerRank, LeetCode, etc., you will lose the interest. You lose the interest. Codeforce has been. That is correct. Coding Ninjas is basically a paid platform. You can opt for it. I don't mind. So you can take any of these platforms and do it. General problem solving जो हम बात आ रहे हैं, काफी नए problems है coding platform पर, of greedy method, dynamic programming, backtracking, and then graph algorithms, etc. You can solve some of them before appearing for your interviews in GATE, in IITs or IISc. That will really help. वरना बच्चों क्या होगा, जब आप अगर ये ना करोगे ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस अगर आप ना करोगे, then you will have a very tough time in IIT's first semester, right? You will start crying, I'm telling you. I have basically come to know of many students of mine, even though they struggled GATE and then got admission, लेकिन प्रोग्रामिंग स्किल्स उनकी कम होने की वजह से, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पुअर रहने की वजह से, राइट, what happened was basically they suffered a lot. They used to cry, and many of them used to telephone and even seek advice, sir क्या करें, कौन सा कोर्स करें ताकि ये असाइनमेंट्स हम कंप्लीट कर सकें. तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट. आफ्टर कंप्लीटिंग गेट, डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट टू हेल्प योर सेल्फ. ठीक है? So this is what, as part of introduction to the course, my objective was to basically talk about in this regard, right? So I think I covered each and every aspect of introduction to the course, right? If there is any other thing, because we are there for some more time, हम बात करेंगे, no problem. थोड़े बहुत क्वेश्चन जो other than GATE है, you are student of BCA 4th semester, we are subject of design. Okay, very good. Design analysis of algorithm, same वही है. Yeah, BCA people also, you can check your eligibility. I think you are eligible. First semester नहीं, आपको third year में आने के बाद लिखना पड़ेगा GATE exam. Vivekananda, I would recommend don't do coding programming along with GATE preparation at this stage. अगर आप GATE 2023 लिख रहे हो तो please don't do programming now. You just focus on GATE preparation, please. After GATE exam, you can concentrate on programming. ठीक है? Don't do programming, don't do coding on any. MCA वाले definitely eligible for GATE exam. Don't worry. Yeah. So this is what is the objective. ठीक है, we have a small amount of time left over. We'll just define the concept of algorithm, definition of algorithm, and then we will try to close for today's session. चलिए, everybody is knowledgeable, of course. I don't deny that, but even then, just to complete the formality, I will just pen down the definition of algorithm, and then we will continue our lecture in the next class. ठीक है? तो चलिए, algorithm basically, before I define it formally, is a solution to problem, to the given problem. Solution है वो. ठीक है? And formally, how do we define algorithm? What is the formal definition? Algorithm, we say, consists of finite
set of steps, statements, steps or statements to solve a given problem. Finite set of steps. तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आपको रिमेंबर करनी है, जो आपको कीप इन माइंड करना है, वो है फाइनाइट, राइट, एंड प्रॉब्लम. तो जो भी आपको प्रॉब्लम दिया गया उसका सॉल्यूशन प्रपोज करना है आपको, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम्स. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इज मोर देन सफिशिएंट इनफ, डेफिनेटली novice engineering mathematics is more than sufficient enough for algorithm. In another perception, you can consider algorithm as a mechanism. You can consider algorithm as a mechanism, or you can say processing logic. It's a mechanism or processing logic which is responsible for converting the given inputs, transforming the given inputs to the desired outputs. Is another perception of algorithm. You can imagine like an abstract machine which is responsible for taking the given inputs, processing them, crunching the inputs, and giving the necessary outputs. Right? Yeah. So it's like a machine, floor machine or some machine like that, which crunch on the numbers, the inputs, and give you the necessary outputs. So that is the philosophy of algorithm. यहाँ पर एक बात और ये भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये भी बोलना चाह रहा हूँ. See, the concept of algorithm is not new to mankind. The concept of algorithm exists right from inception of mankind. Maybe you can say Stone Age or whichever age, prehistoric age, वहीं से algorithm का concept exist है. A procedure which is followed for solving a problem is called algorithm. देखिए, अगर hunting is my problem, जो भी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे हंटिंग के लिए वो एल्गोरिथम है. एग्रीकल्चर इज अ प्रॉब्लम, जो भी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेंगे एग्रीकल्चर के लिए वो भी जो है सो एल्गोरिथम है. मेकिंग ए हाउस, केव्स, ओल्ड एज, दैट इज एल्गोरिथम. आप अपना गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप है प्रोसीजर, राइट. पहले सिलेबस गैदर करेंगे, मटेरियल गैदर करेंगे, फिर उसके बाद आप एक एक करके सब्जेक्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज देंगे, वन बाय वन steps to solve your gate problem. So that is the meaning of step by step procedure. So any procedure that follows step by step procedure to solve a problem, that is called algorithm. Like in the concept of computer based algorithm, ये important है. Computer based algorithm. The concept of computer based algorithm is relatively new to mankind. Yes, it is Arabic term. I will tell you that also. वो बात ही करेंगे हम. Concept of computer based algorithm जो हम रेफर कर रहे हैं ये कोर्स में, that is relatively new to mankind, not more than maybe you can say 200-300 years old. And how the word algorithm came into effect, और उसकी पीछे की हिस्ट्री क्या है. The word algorithm, some people may say what does it stands for, what does it mean, right? Algorithm. ऐसा कुछ नहीं है. The philosophy of naming this term algorithm is that there was a famous Persian mathematician by name Muhammad Musa al-Khwarizmi. It seems some famous Persian mathematician who made a lot of contribution in the domain of mathematics, formal proofs, logic, etc. He made a lot of contribution. So based on his name al-Khwarizmi, the term algorithm has been coined, algorithm has been defined. It is attributed to this famous mathematician, Al-Khwarizmi. The word Al-Khwarizm is a place in Persia which is today's Iran, Iraq. So there is a place called Al-Khwarizm. The Western people cannot pronounce it properly. So Al-Khwarizm has become algorithm. Al-Khwarizm has become algorithm. So that is the meaning of the word algorithm after that. So ये है algorithm. ठीक है. तो चलिए आज का हम यहीं पे रोकेंगे क्योंकि आगे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो फिर हमें और ज़्यादा टाइम लगेगा. नेक्स्ट क्लास में लाइफ साइकिल स्टेप्स की हम बात करेंगे और भी फॉर्मल थोड़े पॉइंट्स एल्गोरिथम के मैं वो लिखूंगा. फिर लाइफ साइकिल की स्टेप्स के बाद विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल डायरेक्टली जंप इनटू नीड फॉर एनालिसिस, मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस, टाइप्स ऑफ एनालिसिस, असिम्प्टोटिक नोटेशंस, ये हम देखेंगे. ओके, हाउ मच शुड आई गिव मतलब क्या है भाई नोविस? हाउ मच शुड आई गिव मीन्स टाइम और एफर्ट और व्हाट डू यू वांट टू से? फॉर गेट 2024 अभी से आप प्रिपेयर कीजिए.
Now in the what order should you prepare? Prepare is first programming data structures, discrete structures, then digital electronics. ये पहले courses आपको पढ़ना होगा जब आप GATE 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लॉन्ग टर्म प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको फंडामेंटल सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करना है, जैसे कि डेटा प्रोग्रामिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डेटा स्ट्रक्चर्स। ये सब्जेक्ट्स पहले पढ़ने के बाद फिर आप आगे के पढ़िए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बॉयज एंड गर्ल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. Continue to attend in the next sessions, and we will try our level best. I will try my level best to justify the purpose, the objective of our crash course. At the same time, you can also put your effort. Okay. Thank you very much. Good night.